प्लस टू जेन आम गेस्ट सार मैंने अच्छन से सार मान को यहाँ साइन करा ये सुलभो वहन वृक्षाकारं भुवनवनसारं जलनिधौ य एवाविर्भूत परिहृतशिला सुन्दरतनुं जगन्नाथो नाथो मम हृदयनाथो विजयताम्। होतारं रत्नधातमम् ॐ अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। ॐ सनप्पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानस्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमीतामस्मिना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनाम् ॐ स्वस्तये ॐ ये सप्ताहाः विश्वारूपाणि भरतः वाचस्पति आरंभं कर्तुम् अहं ये मंचासीनाः अतिथयः भवन्ति तान् अहं प्रार्थये। अस्मिन् अवसरे यत्र कुत्रापि संगोष्ठयः भवन्ति कुत्रचित् आयुर्वेदोपरि भारतीय ज्ञान परंपरा कुत्रचित् वेदानां उपरि भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ावती का आयाम there are three dimensions of study. First, आमे टीचर द्वारा शिखसु जेन टीचर द्वारा शिखसु ताकू आमे ट्यूशन क्लास स्टडी जा कहीबार अच्छे आमे पढ़ी पारिबा तारपरे आमे निजर निजर भितरे से ज्ञान टाकू एक्सचेंज करसु ताकू डिपार्टमेंटल सेमिनार कुहा जाए। सेमिनार जदि राष्ट्रीय स्तर रे हुए सेमिनार राज्य स्तर रे भी हुए जदि राष्ट्रीय स्तर रे हुए ताकू नेशनल सेमिनार राष्ट्रीय सेमिनार ताकू कहा जाए। The leadership of Dr. A.K. Oza, our college is conducting several types of seminars and this is a milestone in this history of college. The concept here is the source of knowledge and development of knowledge. So whenever we talk about the Sanskrit, without the Veda, without the Vedic sermon, we cannot think about the progress of this society. But dear students, when the Veda was written, the society was moving in a different circumstances, civilization was, so to say, unsettled one. And due to the progress of science, scientific research, new changes has taken place both in the social, cultural, biological environment. So in the name of traditions, customs, if we will be rigid on the Vedic system and Vedic culture, then perhaps we may fail to progress. And that will help to solve the various issues now the society is facing. And this one-day seminar. नमः भाई सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य बहु आनंदस्य तथा सौभाग्यस्य विषय यत् अस्ति अस्यां शुभवेलायां भारतीय ज्ञान परंपरा इति अस्मिन् विषये एकदिवसीय राष्ट्रीय संघस्य संस्कृत विभाग अध्यक्षत्वेन
उपस्थितानां अतिथिनां स्वागतपरिचयं विधातुं समुपस्थितोऽस्मि। अस्माकं पुरतः सभापतिपदम् अलङ्कुर्वन्तः महिला महाविद्यालय बलाङ्गीरस्य आचार्यवर्या डॉक्टर अरविंद कुमार ओझा महाभागः। Jama is a 5 ethical rules which is to be observed before practicing asana and pranayama. Jama means the practice of ahimsa, satyam, asteya, brahmacharya and aparigraha. Swaha, swaha, maha, janaha, tapa, satyam. And 7 lokas below the earth, that is Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala, Patala. There, the complete knowledge of the structure of the body is learned by contacting of the Navi region. Navi Chokre, Kabyo, Jivo, Jnanam, Yogi Jnanam. And what I वंदे अहम भवतः सर्वान् नानास्थानसमागतान् संस्कृत प्रिय सेवकान् परम वंदनीयाः अभिनंदनीयाः गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज बलांगीर इति अस्य शिक्षानुष्ठानस्य प्राचार्याः डॉक्टर ए.के. ओझा महोदयाः अस्माकं सर्वेषां वन्दनीयाः अभिनन्दनीयाः मुख्यातिथयः मम अग्रजकल्पः डॉक्टर फाल्गुनी महानंदिया महोदयाः मम मित्रवर्याः तत्र संस्कृतविभागाध्यक्षः डॉक्टर सदाशिव मल्लिक महोदयाः इत्युच्यते। रेखा तो एकादि बिंदु संयोगेन जायमान विस्तृति रहिता दीर्घकार। My dear colleagues and dear students, I am Namrata Ganide, Department of Botany. Today we all are here to discuss about the important topics, the Indian knowledge systems. Yes, it is very important topics to be discussed to enlighten our knowledge. Today I would like to present my topics on Ayurveda. Ayurveda, the traditional Indian system of medicine, has been a cornerstone of Indian culture's heritage for thousands of years. Whilst Ayurveda is one of the oldest system of medicine which come into existence in about 900 BC. Ayurveda words is a conjugation of two Sanskrit words, that is Ayur and Veda. Ayur means life and Veda means the science. Ayurveda literally means the science of life. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वयं जानीमः यत् भारतीय ज्ञान परंपराया मनुस्मृतिर्मध्ये कथं तावत् विषयमस्ति यत् मानव समाजानां कृते आवश्यकं वर्तते। Perception is direct and immediate cognitions thus produced by the interaction between the object and sensor. The define the perception in their sanikritsa janyam jnana pratyeksham. Perception is the knowledge produced by the contact of sense organ with the object. भारतीय परंपरा का संस्कृति विज्ञान तर्क किंवा दर्शन नुहे यह ହେଉଛି विवेक सहित संबंधित धर्म आधारित परंपरा जहाँकि गोटे राष्ट्र को विकसित करिबारे साहाय्य करिଥାଏ। धर्म आधारित परंपरा द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्वभाव तथा आचार विचार को मुख्यतः संस्कृतिर आख्या दिया जाइଥାଏ। आमर एही भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकतारे परिपूर्ण जहाँकि अपरिवर्तनीय अटे। Saroj Sahu is lecturer in political science, Government Women's College, Balangir. He is speaking on Kautilya Satyashastra, a framework for promoting transparency,
and accountability in governance. Saroj. Acharya Chanakya, also known as Kautilya, served as the chief advisor to Emperor Chandragupta Maurya, and from 313 BC to 293 BC, renowned for his exceptional strategic thinking of wisdom, Chanakya articulated his insight on statecraft, warfare, social hierarchy, diplomacy, ethics. Decline over time due to societal shifts and religious shifts. The National Education Policy 2020 aims to reintegrate Indian knowledge system with modern education, promoting gender inclusivity and reviving traditional knowledge. Ramgiri is located in the extreme south part of India, and Olgapur is located on the foot of the Himalayas. The southwest monsoon is generated in the ocean of India, in the Indian Ocean, according to Ference law. ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମଲ୍ଲିକ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ସଂସ୍କୃତ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜି 28/3/2025 ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଏକ ସେମିନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଅଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଅଛି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା। ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସେମିନାରର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଭାଗାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଫାଲୁଗୁନି ମହାନନ୍ଦିଆ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତ ମାତରମ୍।